So you can start with the meeting. Yeah. Okay. Should I start? Yes. Yes. Good evening, everybody. A very warm welcome to all the participants for one more webinar which has been organized by Graceful Living. Before we go on to the webinar, actually, I'd just like to introduce the people who are working for us. There is Mr. Manoj Gursahani, who has been our whole and soul and has done a lot of work in helping us in these webinars. There are others from behind the scenes, Amrita and others of Graceful Living. I would just like to first talk about Tulsi Trust and Graceful Living. Tulsi Trust is the umbrella organization which is responsible for the introduction of Graceful Living. Tulsi Trust does a lot of things in education, medicine, medical help, and technical training and things like that. The introduction of Graceful Living as an object for the caring for elder adults was started 3-4 years back by Mr. Jagdish Chandrai, who is also the chief founder of the Tulsi Trust Foundation, and also who is the chief trustee of Jasloth Hospital. So by and large, what Graceful Living and Tulsi Trust do are things to help the underprivileged, whether it is medicine, whether it is education, and whether it is any form of help that is needed. One of the things I'd like to talk about Graceful Living is shown on the 2 slides which are being put on the screen here. Sakshi, can you put the slides, please? Yeah, sir. Just a minute. So you can see these. This is the first slide. This is only a list of activities that Graceful Living indulges in. And it is something which I think, in my mind, covers all possible help that can be given to the elder adults. Whether it is companionship, as you can see, group mental stimulation, physiotherapy sessions by geriatric physiotherapists. One of these physiotherapists is also with us today on the webinar, and I'm sure you will learn a lot from Dr. Pratha also. Then we have support group meetings with senior citizen associations and art, craft-based and interactive sessions which keep the senior citizens involved and engaged, and so such that their mind is kept active. Then guest lectures and webinars like we are doing today. Technology training sessions, whether it is to do with computers, with mobile phones, or any other piece of any other technical device. Legal aid for seniors, and we have a second slide also. Youth sensitization session with schools and colleges, which is a new activity we started in the last few months. Training people for working with elder adults, medical consultation, training and volunteers, etc. If any further details are required, you will find them on the slides over here. You may contact on the telephone numbers given, either Mrs. Akanksha Hire or Mr. Praveen Damle. Now, getting on with the webinar. Today's webinar is on the youth working with older adults. This is something that we have found is most useful for not only the adults who require the companionship and the friendship and the engagement with the younger people, so that they continue to stay involved in their daily lives. As far as the younger people are concerned, they have never ever interacted with their elders, to some extent with their parents, but the grandparents are something or a set of people that they really have respect for, and they're in great awe of, and there is no conversation or no communication with them. So what we are trying to do in this webinar is talk about how the youth of today can work with older adults and keep them engaged and happy. For that purpose, we have got these our 5 panelists, which I would like to introduce to you. First one is Rekha Parmanand, who is the team leader in the National Helpline for Senior Citizens. Akanksha Hire, who works for Graceful Living as a project associate. Dr. Pratha Mehta, who is also connected with Graceful Living. She is a co-founder of the physiotherapy, the Rehab Center. And there is Kausar Shaikh, who is the deputy manager of Sahabhav. And there is Ankit, Shah, the founder of Silver Amor. As far as I can make out, everybody has come. Mr. Manoj Gursahani, our moderator, who always does a brilliant job, I would request him to please take over and make sure that all of you
are fully interested and get a lot of knowledge and information from this particular webinar. Thank you very much. Manoj, to you. Yes. Thank you, Naval. As always, a pleasure to be associated with Tulsi Trust since, and as I always mention, it's a yet another webinar. I remember the times when during at least COVID and pandemic times, it started, the seed was germinated that time. That webinar would be a way out. Virtual seminars like this would be a great help because people could move out, senior citizens were sitting at home, and they could not go for walks and other things which they would have normally done. So it started and continuing. The enthusiasm has not died down. I can see we keep on. And the beauty about, again, a word from my side for graceful living, which as Naval rightly mentioned, Naval is one of the backbones along with Dr. Prakash Mirchandani, the whole team, Amruta, Srinivas Savan, Praveen Damble, and of course, supported by Jagdish Chenrai ji, who is, giving the necessary resources and support to continue the whole great concept. And the panel discussion which is there today is on very timely thing because we all deal with it on an ongoing basis. When I circulated this webinar details to many of my groups, they all said, oh, this is something which we didn't think about and is the most needed thing, especially from a point of caregivers. So as Naval has already introduced the panelists, I would, and I think you got an interesting mix of panelists and the focus subject being, and to the panelists, welcome once again. And we'll be rotating the panel. So I would request you to keep your answers brief between a couple of minutes, 3 to 4 minutes. Your chance will again come back. I'll keep coming back to each one. We'll keep it interactive, and also to the ones who are there on the webinar, on Zoom, as well as on social media, please feel free to send your questions in the question box. And at the end, we'll also leave time for some Q&A so that if you have any questions, we can get it answered. So starting with it, my first question would be to Ankit Shah, who's the co-founder of Silver Amor Assisted Living Facility. So Ankit, and before that is, we have seen that generally the youngsters need to have patience, needs to have the temperament to deal with their elder senior citizens at home, whether uncle, auntie, mom, dad, etc. So Ankit, what is the need according to you for having professional qualified youngsters in the elder care sector, and how do you see that they are nurtured, and how do you see that they remain in the system? Hello. So, hello everyone. A very good evening, and I'm very glad to be on this platform. It is indeed a very good initiative taken by Graceful Living to focus on a subject which is now requiring the attention of a lot of people. So, as a professional working in this industry, in this field for around 7 to 7.5 years now, I feel that there is a huge amount of need for professionals in this sector. The reason being, we are seeing a lot of the population, the elderly population is increasing. Like what we saw, a population of say 5 to 6% in 1950. Today in 2016, it is around 10%. So there is a humongous amount of increase in the elder population, and that is where the need of professional care is felt. As you know, it requires some kind of special skills to deal with seniors. So that could be a technical skill or some soft skills that are needed to deal with seniors. We at a Silver Amor, we deal with seniors with Alzheimer's and dementia. So probably they are one of the most sensitive segment of elder care, wherein we deal with a lot of other neurodegenerative illness seniors as well. So therein you require a lot of soft skills, like especially like you should have, first and foremost, you should have the kind of compassion that is needed. Plus you should be a bit responsive, have some patience, and you should be adaptable. That's what I need. And apart from that, some technical skills wherein you need to have some kind of knowledge about the first aid, the legal and ethical affairs. Apart from it, the general health issues, like in case like dealing with seniors with Alzheimer's. So for them, as the cognition, basically, as they start losing the cognition, it is very important for the caregiver to understand what the
issues a person is facing, and accordingly you need to adapt and change your care plan. So this kind of technical skills are also needed. As we are seeing that there is a lot of increase in the elderly population in India, the population is also growing. Elderly population is growing as well. It is estimated that by 2031, we'll have at least 19 to 20 crore of senior citizens in India. And for this huge chunk, we'll need professionals who will be able to deal with the growing challenges and who will be able to provide the professional services that an elderly person would need. So that's why there is a need for a qualified and professionals in elder care field. So thank you, Ankit. And you rightly mentioned compassion. And one of the aspects I also feel maybe surely in indoctrinating in your training program is empathy, because that's also very important in dealing with senior citizens. Pratha, question to you. Pratha, it was nice speaking to you earlier today. And again, similarly, what I spoke to you about is that one of my friends whose mother is older. So the question also remains, and I'm sure you deal with it on an ongoing basis, challenges an elder care faces, and how does that youngster, now again, we can define a youngster, anybody, I believe I would define it, anybody younger to the person concerned. So elder care is mainly 60s, 70s, 70s plus, etc. We're getting into problem. Younger care could be 40s, 50s, 30s, etc. So how does one deal with it, especially in your area of physiotherapy, because pains and aches, movement, all these are becoming vital issues, especially in that sensitive time. So over to you, Pratha. It's a wonderful question, sir. Good evening, everyone. It's great to be here on this very interesting topic. And this is a very less touched upon topic. So it's my great pleasure to be here and to address you all on this topic. So, sir, the question that you asked, like we discussed early morning, that the particular patient of an 86-year-old lady. So now, as Ankit sir also mentioned, that the aging population is increasing day by day, but the quality of life of this aged population is not increasing. So we might think that technology has come in, a lot of facilities have come in, but still, if you see the quality of life of an aged person, that has not increased. This is what research studies have said. And aged population faces a wide plethora of challenges and problems, ranging from mental, psychological issues to physical ailments. Physical ailments like joints, muscle pains, then hearing loss, vision loss, balance, coordination issue. This leads to a lot of social issues as well. For example, if you have joint pain, knee pain, you would avoid going out. So that will lead to social isolation, that will lead to depression, or loss of a loved one or a spouse will lead to more psychological issues. There are so many wide range of issues that currently senior citizens are dealing with. And the solution for it is not one direction, it is multifold. A lot of different fields of expertise have to come in and to help the elderly come out of the issues. And one of the major roles that can be played is by the youngsters. They can be either in the family or trained professional youngsters who have had some training of how to go about dealing with an elderly who's suffering through any of these challenges. So some simple things also go a long way in solving the problem. For example, a youngster sitting with an elderly, and it's like a symbiotic situation. Both benefit out of it. So it's not like just the youngster spending time. It's both having equal benefits. So it's such an amazing scene when you see young grandkids sitting with their grandparents and interacting with them. Simple things like watching TV, comedy shows with them, playing carom, chess, some simple fun activities. Or one simple thing that I do to make my grandmother move more is just tell her I feel like having a tea. So out of the love for her grandchild, she goes up and makes the tea. So it's not because I want the tea, but it's because I want her to get up and go and do something, which she would otherwise not comply to if I tell her, chalo, come for a walk. So I know her personality. So these youngsters, once they associate with elderly and the kind of whole ecological change that they can bring about in that elderly's life is something amazing to see. And same the wisdom that they get out of it and the benefit that they reap out of it in terms of compassion, kindness, and the empathy that sir just talked about is a wonderful symbiotic cohesion, I feel. So Pratha, thanks, and covering that up. And maybe my follow-up question would be later on. That is, what you mentioned is beautiful, like making a cup of chai and all that, which
but also sometimes the elderly generation gets repetitive with their same stories, other things. How do we build that? And maybe future we can come to that. Build that patience and empathy in the youngster to say that okay, it's not saying okay, I've heard this story before. Is how to have that patience to say, ठीक है बोलने दो, because unka, that's the story of their life or whatever they did in life. So maybe that's part of my later on question, which I'll come to, because trained youngsters, like in case of Ankit, who are entering the force field is different. Members staying in the house who are youngsters have not been trained because suddenly they have a grandparent. I know of a family, again without getting into name, who have suddenly both the grandparents, one dementia, one having some other issues, cancer related, and they are doing 2 jobs, they are doing virtually from home, they are changing trains, buses, and then you come back home to deal with that. So it gets a little more tough for them. So I'll come back to that, but that's an open, it could be. And now the question would be to Rekha Parmanand, because you're running a national helpline, is what are the benefits of connecting youth and seniors? Again, I don't think it's an easy task and how do you encourage the youth? Seniors are always there. Many seniors who are mentally active would like to volunteer, for the other elder seniors. But how do you motivate the youngsters, because they have so many options today? And how do you connect that in a helpline scenario? Rekha, over to you. Thank you, Manoj sir, and thank you, Naval sir, for the inviting me and giving me opportunity. Before answering your question, I want to brief introduction on this elder line. I just share a screenshot. Just give a minute. Is it visible? No, not yet. Have you given her the screen share? That's it. Now it's, yeah. Yeah. Okay. Is it visible now? No? Yeah. Okay, this is the Elder Line National Helpline for Senior Citizen, as mentioned here. And this is an initiative by Minister of Social Justice and Empowerment, Government of India, and Social Justice Special Assistant Department, Government of Maharashtra, and Implement Agency Jan Seva Foundation in Pune. So we are basically providing these services to elderly, as we know everyone why we need to work on elderly, because the aging of elderly population and is increasing day by day. Even there is a report released by United Nations Population Fund and Helpage India suggests that the number of elderly population is expected to grow to 173 million by 2026. So there is a huge demand, or even the questions regarding senior citizens, any kind of prevention information, any suggestions, guidance, and even due to nuclear family, there is a number of problems increasing, including health, hygiene, everything. So we are basically providing these 4 pillars. It is in Marathi. Could you understand everyone, or shall I? Thoda, if you can explain a little bit in Hindi also. Because Yeah. Already Akanksha ma'am requested to me to speak in Hindi as well. So just as I told right now, this is regarding health awareness program. We are providing the information where we are validated across the Maharashtra state. So it is a national helpline, and right now there is a 30 states online for this helpline, and its helpline is working by morning 8 to evening 8. So 12 hours, 360 days, excluding only 15 January 26, 26 January, 15th August, and 2nd October Gandhi Jayanti. Apart this, the helpline is working for all days, morning 8 to evening 8. So as a field leader, and it's a government initiative. थोड़ा हिंदी में भी बोलेंगे तो चलेगा, थोड़ा हिंदी भी ऐड करो। जैसे बताया कि दिस इज अ गवर्नमेंट रन, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है. We are providing information
guidance and emotional support. And this fourth pillar is field intervention, जहाँ पे हम फील्ड में जाके इनको एक्चुअली गाइड करते हैं. सो एक्चुअली फील्ड में जो भी इंटरवेंशन रहता है रिगार्डिंग रेस्क्यू होमलेस एल्डरली केयर सपोर्ट एंड for abuse, even abandoned elderly, even we are creating ecosystem building, like you people are working in the field, Tulsi Trust. So we are taking like networking and channelize the resources already available in the field, so elderly can easily take the all benefits and he live happily and peacefully. That is our aim and vision of this elder line. So in this, just I want to stop this. रेखा, आपको कितने कॉल्स दिन के आते हैं इसमें? Sir, this is now we are completing 1 year. 1st October say we are on live. So more than lakh calls we are received on this. year? Yeah, in this year. और कितने लोग हैं कॉल सेंटर में आपके जो मैनेज कर रहे हैं हेल्पलाइन? Right now we have 18 call center officers who is in connect center. We call connect center, जिसको call handling की जो CB training, capacity building training we are providing for NIS from NISD NI, and same with 18 field response officer who is operating the field across Maharashtra. पर नेचर ऑफ कॉल्स क्या आते हैं? बहुत कॉल्स आते होंगे लाख में से, जो मेन कॉल्स कौन से आते हैं सीनियर सिटीजन के जिनको हेल्प चाहिए? So basically calls आते हैं इंफॉर्मेशन के, इवन इमोशनल सपोर्ट, हम घर में अकेले हैं हमसे बात करो, या केयर गिवर्स के भी कॉल आते हैं, जैसे मेरी मदर इन लॉ या मदर फादर बेड रिडन है, उनको केयर गिवर्स चाहिए. So like that calls we are receiving, and even field intervention also, rescue reunion operations we are doing, even abuse cases increasing day by day. Maintenance act के लिए हमें कॉल्स भी आते हैं कि हमारा ऑलरेडी प्रॉपर्टी बच्चों ने लिया है, सो हाउ वी कैन टेक बैक. So the SDM has power, so we all information we will give, and also if they need any physical support for how to application, where we have to go, all physical assistance also we are providing in the field. So on this field during we are working, so we also need your support, like you are also providing caregivers, and actually I'm not much aware with Tulsi Trust, just this due to this webinar I know you people are working in Mumbai, even ex-mayor Nirmala Sawant RRTC, so we are in good contact, Nilima Yetkar, and she actually told me to join this program. तो मैं वापस आ रहा हूँ रेखा आपके पास. I'll come back to you because we have to go to see other panelists. And thank you for sharing. Kausar Shaikh, Deputy Manager of Sahabhav. मैंने एक बार विजिट किया है कौसर, तो आप साहबाव के बारे में बताएंगे कि आपका सेंटर क्या है, आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, सिंगल डबल, और आप साहबाव दूसरे से एल्डर केयर से हाउ इज इट डिफरेंट? Good And evening, can you sir. put everybody else on mute? Kausar, आपके लिए रुके हैं. Over to you, Kausar. Yes. Good evening, sir. Good evening. Nice to meet you. Hello, everyone. I'm Kausar from Sahabhav. We are a senior citizen care facility, a premium geriatric care. Currently we are handling 35 clients, 35 residents, including bedridden, normal dementia, Parkinson's, and everyone. I'm working here from last 3 years. This institute started from last 3 years. Now we have 2 centers, and we have a nursing care facilities 24 hours. We have caretakers. तो सर आपके 35 पीछे clients, कोई we आवाज are आ रहा है क्या? 50 कुछ भी people. चल रहा है? Yes, I will. I'll take a leave. One and I second. will get back to you हाँ तो with, I'll get back to you. हाँ, प्लीज एक साइलेंट रूम में जाइए. हाँ जी, अभी बोलिए. Yeah, sure. We have 24-hour nursing facilities, and we have male and female caretakers. For 35 residents, we have at least 50 staff, including nurses, male और आप बोल caretakers. रहे female हिंदी में भी अगर आप caretakers. बात करें, सॉरी एक रिक्वेस्ट है, हिंदी में बात करिए अगर हो सके. Sure, sure. Yeah. हमारे पास 35 clients है अभी रेसिडेंट्स, जो बेड रिटर्न भी है, उनमें कुछ पार्किंसंस वाले हैं और कुछ डिमेंशिया है और कुछ कम एज वाले भी है. एक हमारे पास डाउन सिंड्रोम लेडी भी है. तो इन सब की केयर के लिए हमारे पास मेल केयरटेकर्स, फीमेल केयरटेकर्स,
तो 24 आवर्स नर्सेज भी हैं और एवरीडे एक डॉक्टर विजिट्स होता है जो उनके रूटीन केयर के लिए रूटीन मेडिसिन वगैरह के चेंजेस है, किसी को कुछ थोड़ा सर्दी जुकाम वगैरह कुछ है तो वो रूटीनली वो चेक कर लेते हैं. वी हैव अदर डॉक्टर्स ऑल्सो जो हाईली डॉक्टर्स हैं, MDs और ऑर्थोपेडिक एंड ऑल, वो भी विजिट्स करते हैं ऑन रिक्वेस्ट. और नर्सेज 24 आवर्स रहती है. इनिशियल केयर कुछ लगता है इमरजेंसी कुछ है, किसी का शुगर लो है, वी हैव इन हाउस लेबोरेटरी भी है. हमारे पास इन हाउस लेबोरेटरी है जहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं अगर इनिशियल स्टेज पे कुछ लगता है कुछ जरूरी है, शुगर्स वगैरह डाउन है या उनका सोडियम लेवल कम हुआ है, कभी कभी कोई खाना नहीं खा रहा है, तो इनिशियल स्टेज पे हम ट्रीट कर लेते हैं क्योंकि नर्सेज है और डॉक्टर्स विजिट होता है तो वो हमें बस ये करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं है. दे गाइडेड अस. और जो हमारी ओनर है वो भी डॉक्टर ही है, डॉक्टर मिनी पनिकर. सो शी इज ऑल्सो देयर, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उस रिगार्डिंग. ठीक है, थैंक यू कौसर. हम वापस आएंगे आपके पास. Akanksha, to you, why do you, because graceful living as you are part of it and हमारी टीम उनके साथ आप जो काम कर रहे हैं सब लोग, why do you like working, because it's not easy working with elder citizens or senior citizens? Okay, good evening everyone. Thank you Naval sir, Amruta ma'am and Srinivas sir for giving me the opportunity to be the panelist for the webinar. Sir, answering to your question, मुझे काम करना सीनियर सिटीजन्स के साथ अच्छा लगता है because they are setting the example for the younger generation how your aging can be gracefully, how can you live in a positive attitude and how you can add more productivity to your life. So they are setting an example for the younger generation of us. While I'm working with them, I like the most thing about they are occupied. They are keeping their day full occupied with the things they like. They are following their passion. They are keeping themselves physically as well as mentally busy. So what they couldn't do in their younger times, so now they are following their passions. So आकांक्षा, आपको आप म्यूट में चले गए हैं. Now I'm audible, sir? Yeah. तो ग्रेसफुल लिविंग का नया प्रोजेक्ट चालू हुआ है, दैट इज यूथ सेंसिटाइजेशन विद चिल्ड्रन, विद द यंगर जनरेशन. So when we were spreading the word, when we were coming across, the project started in June, so we were spreading the word regarding the program to the elderly, to the different associations while the support group meeting. So we got a very positive approach towards it. They are very keen interested कि अभी youth sensitization program हम बच्चों के साथ करेंगे. तो सभी elderly बहुत interested थे. कुछ elderly from different association, वो लोग हम लोग के साथ आए from all the way, like from Kharghar, like Khar we had sessions. They attended the session with us. They gave their feedbacks, like input दिया कि हम लोग ने एक structure बनाया है youth sensitization का, तो उनमें हम और ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं. उन्होंने उनका feedback दिया, वो हमें बहुत अच्छा लगा. और like they are very keen interest. They also have a very positive approach toward the younger generation. जब भी हमने graceful living का youth sensitization program we started spreading, so they had a very positive approach toward the younger generation also. Kandivli association है, senior citizen association, so we had an orientation program for them. मतलब 4-5 like 10 senior citizens are ready, like they are willing to do the sensitization program voluntarily. So we had an orientation. In the orientation we discussed like how we can yes. तो हम लोग ने कांदिवली सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ एक छोटा सा ओरिएंटेशन प्रोग्राम लिया. वहां पे like how we can make reach out to the Kandivli schools, like it will be near to them, उन्हें ज्यादा travel नहीं करना पड़ेगा. तो फिर they have given their inputs. We had also had a small roles, like have we discussed कि structure में और क्या कर सकते हैं. We have given them the list of schools so they can visit, and they are very keenly interested and they are giving a positive approach toward it. आकांक्षा, मैं वापस आऊंगा आपके पास. पॉज, अभी थोड़ा हम लोग नेक्स्ट पैनल के पास जाएंगे. वील कम बैक टू यू अगेन. अंकित, बैक टू यू. ये एरिया ऑफ यूथ मैनेजिंग ओल्डर एडल्ट्स, स्पेशली फ्रॉम अ करियर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चैलेंजेस है और क्या अपॉर्चुनिटी है?
Ankit, are you there? Yeah, hi, sir. Yes, sir. Please. So basically, sir, as I told that the elder care field is now increasing, it is getting vast. There are a lot of career options that are coming up, that are opening up. So especially in the field of geriatrics, so it is not necessary that you have to be a MBBS or a MD doctor or a geriatrician to join the field. There's a lot of scope, ample of other opportunities wherein you can step in. You can work as a health educator, or you can work as a personal care assistant. You can be a nursing assistant, social worker हो सकते हो आप. You can be an occupational therapist, psychologist. So there are a lot of ample of opportunities that are coming up. The good thing about working in this field in geriatrics is, as I mentioned earlier, कि opportunities काफी सारी है. Stiff competition is not the reason being there is a lack of professionals in the field. तो आपको कोई बहुत ज्यादा उसमें competition नहीं होगा. And the most important thing is, of course, it is rewarding. The most important thing is you feel a kind of a positive impact, that you are making a positive. आप एक difference, एक positive difference किसी के life में डाल रहे हो. So that is the major benefits of working in elder care fields. And talking about you have, just say if you work for a multinational company, there are fixed sets of protocols that has to be followed. There is a system, a principle, a hierarchy that has to be followed. It's not the same in the elder care field. You are free to innovate. आप कोई नई सर्विसेज, आप नई कोई इनोवेशन लेके आए, and if it is doing good to the sector, it will be certainly accepted, and also it will be replicated with other such professionals. So there are a lot of career options in this. And apart from that, as I mentioned earlier, okay, you need not be a doctor only working in this field. You can be working in any capacity, a caregiver, a counselor, you can be a psychologist, you can be a gerontologist. So there is an ample of opportunities and समझ गया scope अंकित. for seniors. और एक क्विक क्वेश्चन सवाल कि आपका ये सेंटर है कहाँ पर? सर हमारा सेंटर उत्तन बीच के पास है. अगर आपने सबने एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम सुना है, अम्यूजमेंट पार्क, हम उसके पास ही है. इट इज प्योरली एन असिस्टेड लिविंग होम, एंड वी हैव बीन रनिंग दिस फॉर 7-8 years सिंस 2015. तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिपेंडेंट सीनियर्स को लेते हैं. इट कुड बी मेजरली अल्जाइमर एंड डिमेंशिया, देन पार्किंसंस, पैरालिसिस. अपार्ट फ्रॉम दैट एनी न्यूरो डिजेनरेटिव इलनेसेस हो, हम उनको लेते हैं. We have a team of doctor, physiotherapist, nursing staff who's available on ground, and there is a emergency backup as well. हमारा जो सेंटर है बेसिकली, as far as I know, अभी तक का बॉम्बे सिटी का सबसे बड़ा सेंटर है. We are spread across 40,000 square feet of lush green land, जहाँ पे पूरा जो कंस्ट्रक्शन है सेंटर का, ये एक बैरियर फ्री डिजाइन से किया हुआ है, जिसको हम लोग एल्डर फ्रेंडली डिजाइन बोलते हैं. उसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया हुआ है that there are railings, there are grab bars, एंड इसके टायर्स लगे हुए हैं, रैम्प्स बने हुए हैं, एंड देयर इज एम्पल ऑफ ओपन स्पेस केप्ट फॉर सीनियर सिटीजन टू गो अबाउट. नॉर्मली क्या होता है, एक रूम में जब एक सीनियर सिटीजन विद अल्जाइमर या डिमेंशिया रहता है, तो दे बिकम रूम बाउंड. उनको ये लगता है ये 4 दीवारी में हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी. द मैक्सिमम दे डू इज दे वॉच टीवी विच इज इररिलेवेंट. तो हियर इन इट इज द ऑपोजिट. हमारे जितने भी रेसिडेंट्स हैं, दे आर ओनली इन द रूम ड्यूरिंग आफ्टरनून टाइम में, पोस्ट लंच, लंच के बाद थोड़ा 2 hours के लिए they go for a short nap. Apart from it, they are all in the common activity and dining area. We have a lawn inside the premises. एक jogging track बना हुआ है, activity dining area बना हुआ है. So it's an open space. Plus the major benefit is that everything happens under a supervision. It is monitored. There are CCTV cameras which are being monitored. So अंकित, आप अपना वेबसाइट का डिटेल चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, तो जिसको देखना है कर लीजिए. तो बैक टू यू प्रथा. तो अंकित मैं वापस आऊंगा आपके पास. बैक टू यू डॉक्टर प्रथा. इज एक टर्म दिया था इंटरजेनरेशनल फिटनेस. हाउ डज इट बेनिफिट यंग एंड ओल्ड को, कैसे बेनिफिट करता है? इंटरजेनरेशनल फिटनेस, आप में से काफी सारे लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना होगा कि इंटरजेनरेशनल फिटनेस ये क्या होता है. तो जैसे शब्दों में ही आता है इंटर जनरेशन, मतलब अलग अलग जनरेशन को आप साथ में एक फिटनेस ट्रेनिंग दे रहे हो. तो ये काफी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जो कुछ सालों में अभी काफी ज्यादा शुरू हुआ है, जिसमें आप एक सीनियर या ओल्डर एडल्ट को
एक यंग एडल्ट से, जो कि एनीवेयर बिटवीन 16 प्लस 16 साल के ऊपर का कोई भी एडल्ट, और एक सीनियर सिटीजन 60 के ऊपर के, उनको आप साथ में फिटनेस रिलेटेड ट्रेनिंग दे। तो आप सोचेंगे कि ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल है? तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है और हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। जैसे एक स्टडी मैं आपको बताऊंगी 2015 में कंडक्ट की थी। तो एक ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन लिए जिनको पेयर ग्रुप एक्सरसाइज करवाई, मतलब सीनियर सिटीजन के एक ग्रुप को साथ में एक्सरसाइज ट्रेनिंग दी 8 हफ्तों के लिए, और एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग दी 8 हफ्तों के लिए। मतलब एक फिजियोथेरेपिस्ट और या फिर एक फिटनेस ट्रेनर और एक सीनियर एडल्ट, ऐसी ट्रेनिंग दी 8 हफ्तों के लिए। और एक तीसरा ग्रुप बनाया जिसमें इंटर जनरेशनल फिटनेस ट्रेनिंग दी, मतलब आपका ग्रैंड किड और आप ऐसे साथ में, या फिर कोई भी एक दूसरा एडोलेसेंट और आपके साथ पेयरिंग करके उसको वैसे आपको ट्रेन किया। तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए। पहले ऐसे लगा था कि इंडिविजुअल फोकस रिटेंशन ट्रेनिंग का ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा, या फिर आप आपके एज वाले लोगों से एक्सरसाइज करोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन जो रिजल्ट्स मिले वो इतने अमेजिंग थे कि सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, ज्यादा हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस भी ये ग्रुप में बढ़ी, जहां पे इंटर जनरेशनल ट्रेनिंग दी गई। तो वो स्टडी के बाद जब आगे रिजल्ट्स एनालाइज किए और ये काफी जगह कंडक्ट हुआ, तो ये रियलाइज हुआ कि ये कॉम्बिनेशन एक लॉक एंड की वाला कॉम्बिनेशन है, कि एक यंग एडल्ट जो ग्रो हो रहा है, जिसको एक नर्चरिंग का जरूरत है, और एक ओल्डर एडल्ट जो एज हो रहा है, जिसके पास वो विजडम है जो इसके काम आएगी, और इसके पास ऐसे कुछ एंथुजियास्टिक स्किल्स है जो इनके काम आएंगे। तो इन दोनों का जो क्लब है उसे कहते हैं इंटर जनरेशनल फिटनेस ट्रेनिंग। और एक बहुत अच्छा अमेरिका में प्रोग्राम इसके ऊपर बेस किया है, जिसको बोलते हैं लाइफ प्रोग्राम, मतलब लिविंग वेल विथ इंटर जनरेशनल फिटनेस एंड एक्सरसाइज। तो ये उन्होंने पूरा एक मॉड्यूल डेवलप किया है जो कि 8 हफ्तों की फिजिकल ट्रेनिंग है, सीनियर और जूनियर को क्लब करके, और साथ साथ 16 हफ्तों का एक ईमेल द्वारा एक दिया हुआ मॉड्यूल है, कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज या फिर बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज या डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए वो ईमेल द्वारा न्यूज़लेटर जाता है। तो ये काफी कंट्रीज में शुरू किया गया है ओल्डर एडल्ट्स के बेनिफिट के लिए, और उससे काफी ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट्स इवन यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा मिले। तो इंडिया में भी ऐसे मॉड्यूल्स आ रहे हैं, जैसे कंपेनियनशिप एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है जो ग्रेसफुल लिविंग करता है, जहां पे आप कंपेनियनशिप करवा रहे हैं एक सीनियर एडल्ट किसी भी जूनियर या फिर मिडिल एज पर्सन के साथ। जैसे सर ने बोला एनी एडोलेसेंट मींस एनीबडी यंगर देन द सीनियर एडल्ट, तो उनका जो कंपेनियनशिप से जो बेनिफिट डिराइव हो रहा है वो क्लास अपार्ट है, उसके काफी सारे बेनिफिट्स है। एक बहुत छोटा एग्जांपल देना चाहूंगी सर। मेरे खुद के एक पेशेंट थे, शी वाज 86 ईयर ओल्ड, और शी टर्न ब्लाइंड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो पैंडेमिक के टाइम पे उनका कंप्लीट विजन चला गया, और वो अकेले रहते थे अपनी एक मेड के साथ, उनके बच्चे यूएस में रहते थे। तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने इतने साल काटे एक बहुत सोशल लाइफ में, जहां उनका बहुत एक्टिव सोशल लाइफ था, और वो काफी कंट्रीज घूम चुके थे, 26-27 कंट्रीज में वो रह चुके थे ड्यूरिंग हर वर्किंग ईयर्स। तो उनके लिए वो एक बहुत डिफिकल्ट टाइम था, वो रियलिटी एक्सेप्ट करना कि लॉस ऑफ विजन की वजह से वीडियो कॉल वगैरह भी पॉसिबल नहीं था। एंड देन टू ऐड टू हर ट्रबल्स उनका हियरिंग भी चला गया। तो उनके लिए वो इतना डिफिकल्ट मोमेंट हो गया था, और वो टाइम पे उनके फैमिली ने फिजियोथेरेपी शुरू करवाया। तो शुरू शुरू में वो कंप्लायंट नहीं थे फिजियोथेरेपी के लिए, लेकिन जैसे धीरे धीरे हमने थोड़ी थोड़ी कोशिश की, मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक सीनियर सिटीजन को देखने का नजरिया बहुत अलग होना चाहिए। इवन तो मैं एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखने की आदत में आ चुकी हूँ इतने सालों से, पर एक अलग नजरिया रखना, ये मुझे रियलाइज हुआ। और उनका पूरा सेशन ना 1.5 घंटे का सेशन चलता था, उसमें मैं उनसे 20 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं करवाती थी। उनका ज्यादातर सेशन वही जाता था कि अच्छा आपने क्या खाया, आपने क्या किया, उनके रोजमर्रा की जो तकलीफें थी वो सुनना। तो वही उनके लिए एक मोटिवेशन और ट्रीटमेंट बन गया था, कि सिर्फ कोई आता है मेरे से बात करता है, और उन बातों में कैसे ट्रिक डाल डाल के उनसे एक एक्सरसाइज भी करवा लेना, वो एक इतनी अच्छी कला मैंने सीखी। तो उनके रिलेटिव्स को हमेशा लगता था कि मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ, उनके मदर के लिए। बट मुझे ये बात पता है कि मुझे उनसे जो मिला है सीखने को, बिना उन्होंने मुझे डायरेक्टली कुछ सिखाए, कहने को तो मैं उनका सेशन ले रही थी, बट जो मैंने उनसे बदले में सीखा है वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इंटर जनरेशनल फिटनेस ट्रेनिंग का।
तो ये एक नई चीज है जो आप सबको आज मैं बताना चाहती थी, और यही चीज आप भी आपके घर में ट्राई करके देखिए। आपके अगर कुछ यंग ग्रैंड किड्स हो तो आप ट्राई कीजिए कोई एक्टिविटी उनके साथ शुरू करने की जो कि फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटी हो। थैंक यू प्रथा, आपने जो बहुत ब्यूटीफुल बात बताई। समटाइम्स वी गो टू ट्रेन बट हम भी नॉलेज लेके आते हैं, और एंड आई कैन अंडरस्टैंड उनको कितनी प्रॉब्लम होगी, दोज हु आर लूजिंग स्पेशली कोविड में साइट लूज करना, हियरिंग लूज करना। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्हेन आई स्पीक टू लॉट ऑफ पीपल एंड आई गो टू मीट सम ओल्ड अंकल एंड आंटी, ओल्ड कजिन्स, तो मैंने ये देखा जो आपने बहुत बेहतरीन बात बोली कि आज कोई सुनने वाला नहीं है, सब अपने धूमधाम में भागे हुए हैं। एवरीबडी इज रनिंग रनिंग रनिंग, आई डोंट नो वेयर, वी आर ऑल रनिंग फॉर लाइवलीहुड, वी आर ऑल रनिंग फॉर वेरियस थिंग्स, बट द टाइम टू नोबडी टू सुनने वाला नहीं चाहिए। और घर में सुन सुन के क्या है, तो दैट एक्सटर्नल पर्सन जो सुनता है, आई थिंक अगेन ट्रेनिंग में दो चार चीज बोलता हूँ लाइफ में, दो चीज तो कॉलेज और हार्वर्ड में भी नहीं सिखाते हैं, काइंडनेस, एम्पैथी, माइंडफुलनेस एंड हैप्पीनेस। तो ये आई थिंक ह्यूमन क्वालिटीज आर मिसिंग, एंड स्पेशली लोग बहुत इंसेंसिटिव हो गए। एनीवे दैट कुड बी अनदर पैनल डिस्कशन व्हिच विल कम टू लेटर। तो रेखा, बैक टू यू। आपके जो अभी चल रहा है हेल्पलाइन, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा कि ये हेल्पलाइन के थ्रू आपका क्या निचोड़ आया है, कि क्या, बिकॉज लाख कॉल साल के आ रहे हैं, इतने कॉल्स, प्रॉब्लम एरियाज क्या है, अगर आपको समझो एक दो चार पॉइंट का किसको सोल्यूशन देना हो, गवर्नमेंट को देना हो, उसको क्या होगा आपका, मतलब इसमें बुलेट पॉइंट्स क्या होंगे? एक्चुअली अगर देखा जाए सोल्यूशन देना है गवर्नमेंट को, और जो कॉल क्लासिफिकेशन हम करते हैं, तो मोस्टली लैक ऑफ नॉलेज है, जहाँ पे हम यूथ का यूज कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। और जितना भी हो सके हम पब्लिसिटी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। जैसे अभी यूथ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हम रखते हैं रूरल में या ब्लॉक वाइज विलेज में। तो इम्प्लीमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गवर्नमेंट को हम सजेशन देना चाहिए स्ट्रांगली। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है ओल्ड एज होम का, जो 150 बेड का, most of the district, even in Mumbai there is no free old age home, Matrushi old age home like that. So we are also struggling for accommodation homeless elderly in Mumbai. So that this suggestion also we can give. Even many of suggestion came from senior citizen association also, like bus में इतना रिजर्वेशन होना चाहिए, और अवेयरनेस कैंपेन है। तो उसके लिए पब्लिसिटी के लिए प्रिंट मीडिया ने कैसे आगे आके मतलब प्रोएक्टिवली उन्होंने पब्लिसिटी करना चाहिए। सो ये सारे जो सजेशन है वी कैन गिव टू गवर्नमेंट्स। एंड सीनियर सिटीजन एक्ट का भी वाइडली डिस्कशन होना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए, जिसमें ये यंग हमें ज्यादा हेल्पफुल लगते हैं। क्योंकि we cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for future. ऐसा किसी ने कहा है, ये फेमस कोट है, youth is a gift of nature but age is a work of art. So this kind of we can give suggestion to government. Thank you so much. Again I'll now go back, कौसर जी, आप जो सहभाव चला रहे हैं, सेंटर है, सब कुछ है, मगर उसमें आपको चैलेंजेस क्या आते हैं? बिकॉज आपके पास सब मल्टीपल डिजीजेस के लोग हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, किसको अल्जाइमर्स है, किनको क्या है। तो जैसे आपने बताया, मैंने सेंटर विजिट किया है, कि आपके पास डॉक्टर ऑन कॉल है, पैथला माँ का आपके पास है, मैं मिनी को भी मिला हूँ आके वहाँ पर, मगर चलाने में आपको स्टाफ मिल जाता है, क्या चैलेंजेस है आपके वहाँ पर? और स्पेशली जब उनके यंगस्टर्स विजिट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को या जो एल्डर सिटी, बिकॉज उनका विजिटिंग आवर्स होगा, तो क्या चैलेंज लग रहा है आपको? चैलेंजिंग सबसे पहले होता है कि स्टाफ को हमें उस अकॉर्डिंग ट्रेन करना होता है कि उनको पेशेंस रखना है उनके साथ डील करते वक्त, क्योंकि उनका मूड स्विंग होता है। वो लोग कभी गुस्से में होते हैं, कभी बहुत शांत होते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि उन्होंने खाना खाया है, नहाया है, फिर दे वांट कि वापस नहीं, मुझे नहीं नहलाया, कोई मेडिसिन नहीं खा रहा है।
तो उनके साथ कैसे डील करना है, पहले तो हमें स्टाफ को ये ट्रेन करना पड़ता है। इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, कि ये है कि अपने से होता है कि हम पेशेंस रखें, उनको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करें कि कैसे वो कन्विंस हो, कुछ अलग तरीके से उनको थोड़ा बातों में उलझा के कुछ और देके। कोई मेडिसिन नहीं ले रहा है तो हम उनको कोई अलग तरीके से मेडिसिन दे दें, किसी फ्रूट में या खाने में, जैसे भी उनके लिए जो जरूरी है, एटलीस्ट वो मेडिसिन हम उनको किसी फ्रूट के साथ या किसी स्वीट डिश के साथ दे दें जो उनको पसंद है। वैसे करके हम करते हैं मैनेज उनको थोड़ा बहुत। कभी कभार वो रात को नहीं सोते हैं, उनको ऐसा लगता है कि रात नहीं है, दिन है, मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भी खाना खाना है। तो उनको थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा डिफिकल्टीज आती है कभी कभार हो जाता है मैनेज, ऐसे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसा कुछ लगता है तो फिर हम उनके बच्चों से बात करवाते हैं, तो फिर उनके बच्चों से कभी कभी वो कन्विंस, जो चीज हमसे कन्विंस नहीं होती है तो कभी कभी उनके बच्चों से कन्विंस हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके बच्चे नहीं कन्विंस कर रहे, बट वो बात हम कन्विंस कर लेते हैं उनको, क्योंकि दे आर हैबिचुएट, अभी हमारे साथ उनको आदत हो गई है, सुबह शाम हमें देख रहे हैं, अपने साथ है, तो वो एक कंफर्ट जोन आ जाता है उनको कि हाँ मैं इससे बात करूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसे। कि मैंने देखा कभी कभी ना फैमिली मेंबर वाले अपने खुद के फैमिली से नहीं समझते हैं। इट्स लाइक अ लाइफ में कि जो फादर पेरेंट को बोलता है और बच्चे उनका सुनते नहीं, हर एक्सटर्नल व्यू से ज्यादा। इट्स नॉर्मल साइकोलॉजी। एनीवे, थैंक यू। एंड आकांक्षा, ओवर टू यू। वर्किंग विद सीनियर सिटीजन्स थ्रू ग्रेसफुल लिविंग, आपने क्या सीखा? आपका नजरिया क्या बदला? ओके जब मैं ग्रेसफुल लिविंग में आई तो मेरा नजरिया कुछ अलग था, पर जब मैं ग्रेसफुल लिविंग के साथ डिफरेंट एसोसिएशंस, ऑनलाइन मीटिंग्स, रेसिडेंस होम में विजिट किया तो मेरा नजरिया बहुत चेंज हुआ। मींस ऑपोजिट everything was there. So like every older adult is not same. It varies from person to person. Everyone is like they can learn one like they can learn new things, they can adapt new things. If like every city older मतलब जो भी older adults है सबको disease नहीं होता है. If they are having disease, how they can cope and still they are physically active. एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, कांदिवली एसोसिएशंस में ग्रुप सेशंस चालू थे हमारे एक पार्टनर के साथ, EHA के साथ. So there was everything craft activities, how you can keep your mentally active yourself. तो वहाँ पे बहुत सारे एवरी साइकोलॉजिस्ट कम्स, सो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज वो करते थे. तो फिर वहाँ पे एक पजल्स रहता था, क्राफ्ट बनाना रहता था. समटाइम्स आई वाज लाइक कैसे करूँ, बट जो ओल्डर एडल्ट्स है दे वर क्विकली डूइंग पजल सॉल्व करना, क्राफ्ट बनाना, बुक मार्क्स बनाना. So they were so keenly interested and they were actively doing that. So they are बहुत मतलब कीन इंटरेस्ट होता है जब नई चीजें उन्हें सीखनी मिलती है. जब भी हम लोग जाते हैं और बताते थे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी, लाइक वी हैव वन ऑफ अ प्रोग्राम इज मोबाइल टेक्नोलॉजी. सो इन एवरी मीटिंग आई गेट अ फीडबैक, नहीं आप हमारे यहाँ मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम कीजिए, बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टेड. बिकॉज नाउ ड्यू टू लॉकडाउन एंड दिस वी हैव कम क्लोजली टू द टेक्नोलॉजी, एंड द टेक्नोलॉजी उन्हें बहुत सीखना, बहुत इंटरेस्ट रहता है. एंड वी ऑल्सो हैड इन घाटकोपर एसोसिएशन में हम लोग ने टेक्नोलॉजी प्रोग्राम किया. तो वहां पे भी जो सिटीजन्स थे, वहां पे फीमेल्स ग्रुप था पूरा. So they were keenly so interested, and our resource person Mrs. Mansi Golkar is so keenly like she finishes everything. मतलब उन्होंने जब तक किसी का query solve नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ते. So my perspective has always changed in a very positive approach, and yes. Thank you, Akanksha. अभी फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे, तो टाइम का नजरिया देखने के लिए अंकित बैक टू यू. इसमें आप तो होम चला रहे हो, असिस्टेड लिविंग, इसमें पर्क्स क्या है और पॉजिटिविटी क्या है आपके लिए? The positivity, majorly the positivity is that, as I mentioned earlier, that you are making a positive in someone's life. You are making a positive difference, and the perk is to see that when a resident is coming in, they have उनके पास बहुत सारे challenges होते हैं. That as we saw कि वो थोड़े से disoriented होते हैं, meal के timings नहीं होते, medication सही से नहीं ले पाते हैं. And the most important thing is the personal hygiene, जिसको हम incontinence care बोलते हैं. So that is not there.
And with senior citizens, incontinence care is the major source of infection. So when we remove all the small issues, जैसे कि अपने इनको अच्छे से इनका hygiene care अच्छा है, you are giving them a good meal, timely meal हर time पे. It's not erratic meal, food habits. जैसे वो घर पे जब भी मन किया तभी खा लिया, they'll have some dry snack या कुछ खा लेगा. Herein we have a systematic meal plan जो dietitian ने बनाया हुआ रहता है. तो उनको every 2 hourly small meals दिया जाता है according to their taste, their preferences and their medical condition. ये देखकर जब हम उनको meal serve करते हैं, एक अच्छा उनके routine आ जाता है. When they get proper little oriented, उनको पता है कि अभी दोपहर है, अभी we'll have to sleep. It is evening, we'll have to have tea, coffee, and then we'll go for a walk. So when they get into this routine, उनका overall quality of life improve होता है. So seeing that difference, we as a professional when we are working on ground, हमको नहीं पता चलता how much difference it is being making. But जब families एक महीना 15 दिन बाद visit करते हैं, they feel that my mother is a different person exactly. Like we have had a senior citizen, एक uncle है जो who's been working in a senior most position at मंत्रालय. So when we give him some games, कुछ board games दे दिया, कुछ cognitive activities दे दिया, so that time they say कि ये मैं थोड़ी करूंगा, मैं इतना बड़ा senior आदमी था, ये सब आप बच्चे लोगों का मुझे दे रहे हो. But after a point of time, after some time, they realize that everyone is doing it of my age, but I am the only one who's left out. They also get involved. So जब ये family देखते हैं that पापा ने ऐसा कभी घर पे नहीं किया, but when he's here, he's getting involved in all these activities. ये सब चीजें कर रहे हैं, craft कर रहे हैं, music therapy, music सुन रहे हैं. So that's what gives us happiness to see, to hear that there is a positive difference in the life of the residents. Thank you so much, Ankit. Pratha, ये because old age में फिजियोथेरेपी कराना बहुत टफ बात है, because joint pains है कि वो, तो ये कैसे मोटिवेट होता है उनको करने के लिए? How is there a method? एक तो बोलना करना है, डिसिप्लिन कर नहीं सकते because sometimes they don't like when you told them. तो how do you motivate them and how? आज का टॉपिक है यंगस्टर्स कैसे डील करें एडल्ट से जो घर पे है, तो वो आप कैसे करते हो? हाउ हैव यू डिवाइस्ड एनी स्ट्रैटेजी, फॉर्मूला, मेथोडोलॉजी? आप जरा शेयर करें. सर, तो ज्यादातर जो हम देखते हैं वो ये होता है कि घर पे ओल्डर एडल्ट अगर कोई रीजन से कुछ नहीं करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उनको नी पेन है और वो बाहर नहीं जाना चाहते, तो लेबल कर दिया जाता है कि ये करना ही नहीं चाहते, ये शी इज नॉट इंटरेस्टेड, इनको उठना नहीं है, आलसी हो गए हैं. तो वी अंडरस्टैंड कि कई बार बच्चे गलत मीन नहीं करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के लिए या पेरेंट्स के लिए, बट वो एक थोड़ा देखने का नजरिया वैसा बन जाता है कि करना नहीं चाहते हैं. तो वो उनको इनफैक्ट और डिमोटिवेट कर देता है जब एक ओल्डर एडल्ट सुनता है घर वालों से कि हमेशा ये बोला जाता है कि आप करना नहीं चाहते हो, आप आलसी हो गए, आप उठना नहीं चाहते हो. तो स्टेप 1 जो मैं हमेशा इसमें इंक्लूड करती हूँ वो ये है कि आप उनसे बात करो और जानने की कोशिश करो कि वो क्यों नहीं करना चाहते. और कई बार ये क्यों का जवाब बहुत सिंपल नहीं मिलता है. जैसे मेरे पास एक पेशेंट थे, वो 10-12 साल से योगा करते थे, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था योगा और प्राणायाम के सेशन में अर्ली मॉर्निंग रोज जाना, लेकिन अचानक से 2 महीने से उन्होंने बंद कर दिया था. तो जब उनको रिलेटिव्स ने पूछा, हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि घुटने में दुखता है इसलिए बंद कर दिया. तो रिलेटिव्स को भी लगा हाँ नी पेन है इसलिए उन्होंने जाना बंद कर दिया. फिर नी पेन तो रिजॉल्व थोड़ा चलो कुछ हद तक हुआ था, बट जब हमने और थोड़ा हिस्ट्री प्रोब किया और थोड़ा बात की तो हमें रियलाइज हुआ कि नी पेन है इसलिए उन्होंने जाना बंद किया, ऐसी बात नहीं है. उनको नी पेन है इसलिए वो योगासन के सेशन में खुर्ची लेके बैठते थे. तो जब वो खुर्ची लेके बैठते थे वो तो बराबर सब कर लेते थे मॉडिफाई करके, लेकिन उनके आजू बाजू वाले दूसरे दोस्त बोलते थे देखो बड़ी आई महारानी खुर्ची पे बैठती है. सो दैट अफेक्टेड हर. तो उनको वो चीज थोड़ी हर्ट हो गई कि मैं खुर्ची पे बैठती हूँ तो दूसरों को लगता है मैं एटीट्यूड दिखा रही. तो उनका रियल रीजन वो योगा सेशन छोड़ने का और वापस नहीं जाने का ये था कि अगर वो चेयर पे बैठेंगे तो वापस लोग ऐसा कहेंगे, और नीचे बैठने को तो फिजियोथेरेपिस्ट ने मना किया है, तो भले दर्द चला गया लेकिन नीचे भी नहीं बैठ सकते तो अब योगा बंद करना पड़ेगा. तो कई बार ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बट कॉम्प्लेक्स रीजंस होते हैं जो हमें एक पहले ग्लांस में पता नहीं चलता. तो इसमें यंगस्टर्स का बहुत अच्छा रोल आता है. तो जहां बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते हैं या एक थर्ड पर्सपेक्टिव से एक ट्रेंड यंगस्टर बात करते हैं, जैसे आपने बोला कई बार एक स्ट्रेंजर को कुछ बताना ज्यादा आसान हो जाता है
तो जब वो एक स्ट्रेंजर बट अ ट्रेन्ड इंडिविजुअल जो उस तरह से एनालाइज कर रहा है, वो जब बात करता है तो एक सीनियर सिटीजन बहुत इजीली अपनी प्रॉब्लम बोल पाता है कि हाँ ये कारण है। तो स्टेप 1 की कारण रियल रीजन पता करना, जो कि वन वर्ड आंसर नहीं है, वो आप एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद ही जान पाओगे कि क्या उनके मन में चल रहा है। तो वो प्रॉब्लम हमें पता चल गई, फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना। तो अगर कोई जॉइंट एक्स, पेन्स, कोई मस्कुलोस्केलेटल इशू है, जो भी इशू है उसको सबसे पहले तो रिजॉल्व करना, और उसके बाद सेकंड स्टेप वो होगा कि उन्हें मोटिवेट करना कि अब ये काम करो। कई बार जैसे अगर चलते हुए वो गिरे हैं और फ्रैक्चर हुआ है, तो अब वो डरेंगे बाहर जाने के लिए। तो हमने फिजिकल प्रॉब्लम पहले सॉल्व की और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस फैक्टर लाया कि मैं हूं आपके साथ, आप नहीं गिरोगे, मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगी। तो वो एक एवरी डे एक लिटिल लिटिल बेबी स्टेप्स ऑफ मोटिवेशन जो उनको मिलता है, वो एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करता है एक सीनियर सिटीजन के लाइफ में। और हम इसे स्मार्ट गोल मेकिंग बोलते हैं फिजियोथेरेपी में। स्मार्ट मतलब एक वेरी स्पेसिफिक गोल, कि उनको एक गोल देना। जैसे सपोज आप कोई सीनियर सिटीजन को बोलते हैं या किसी को भी, एक ओल्डर एडल्ट को या किसी को भी बोलते हैं कि आप रोज वॉक कीजिए, ये बहुत वेग गोल सेटिंग हो गई। रोज वॉक कीजिए, कितना वॉक कीजिए, कहाँ वॉक कीजिए, कैसे वॉक कीजिए, कुछ भी जानकारी दिए बिना उनको सिर्फ कुछ बोल देना, तो बहुत कम चांस है कि वो अच्छे से होगा। बट अगर आप उनको एक स्पेसिफिक गोल दे कि आपको रोज वॉक करना है, एक मेजरेबल गोल दे कि आपको 3000 स्टेप्स रोज चलना है, एक आजकल मोबाइल में फिटनेस स्टेप्स ट्रैकिंग या पीडोमीटर आप इजीली आता है, और सीनियर सिटीजन भी आजकल इजीली मोबाइल स्मार्टफोन्स रखते हैं, उसमें आप उनको डाउनलोड करके ऑटो पे सेट कर दीजिए, तो उनको कुछ करना नहीं है, बटन क्लिक, उनके पास फोन रहेगा, अपने आप वो मेजर करेगा। तो उनको आपने ये बता दिया कि ऐप खोलना कैसे है एक क्लिक से, और उस पर देखना है कितने स्टेप हुए, तो वो उनके लिए रोज एक टारगेट हो जाता है और एक टाइम बेस्ड गोल हो जाता है कि रोज आधा घंटा इतना इतना टाइम आप चलिए और इतने स्टेप्स इतने में हो जाने चाहिए, और एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे निकाल के दे दीजिए कि शाम को बच्चे नीचे खेलते हैं तब आप आधा घंटा ये चल दीजिए। तो उनको जब आपने वो सिचुएशन सिंप्लीफाई करके दे दी, एक स्पेसिफिक मेजरेबल टाइम बेस्ड एंड अचीवेबल गोल बना के दे दिया, जो जिससे वो बहुत रिलेवेंट और रिलेट कर सके, तो वो बहुत इजीली वो अकम्प्लिश करेंगे। तो कई बार जब हम लेबल करते हैं कि सीनियर सिटीजन कुछ नहीं कर रहे, या वो मोटिवेटेड नहीं है, या वो लेजी है, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप नहीं ले रहे हैं उनसे वही चीज करवाने के लिए जो वो हैप्पीली कर सकते हैं। हमने एक वेग सेंटेंस बोल के उनके ऊपर डाल दिया, आप चलो। तो अदर देन दैट हम कितने इनोवेटिव तरीके से कर सकते हैं। तो आई थिंक यंगस्टर्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनकी एक एंथुजियास्टिक एनर्जी ही एक सीनियर सिटीजन को और एनर्जेटिक कर देती है कुछ अचीव करने के लिए। थैंक यू प्रथा, वेरी नाइसली कम्युनिकेटेड। स्मार्ट गोल्स, या सो मैनेजमेंट टर्म होता है स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट, मेजरेबल, कंप्लीटली टाइमलाइन काइंड ऑफ थिंग। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप अगेन। रेखा जी, फाइनल क्वेश्चन इन शॉर्ट, कि ड्यूरिंग ऑल दिस, ये हेल्पलाइन चलाने से भी डज इट पे? सो कोई सीनियर सिटीजन अगर करना चाहे हेल्पलाइन में काम, वॉलंटियर करना चाहे, आपका फॉर आई मीन कुछ उनको इंसेंटिव मिलता है हेल्पलाइन में पार्टिसिपेट करने के लिए? एंड हाँ, तो हाउ डू दे रीच आउट टू यू? बिकॉज वन ऑफ द थिंग आई बिलीव इज, एक रिटायरमेंट के बाद जब आदमी का माइंड इतना ऑक्यूपाइड रहता है, लाइफ में पूरा भागम तोड़ कर रहे हैं, सडनली इज फ्री, बोलते हैं आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये आपका हेल्पलाइन कुछ उसमें प्रोवाइड करता है? सर एक्चुअली हमारे यहाँ वी आर रिसीविंग मेनी कॉल्स, बहुत ऐसे कॉल्स आते हैं कि दे वांट टू डू वॉलंटियरशिप मुंबई से या कहीं भी, इवन विलेज लेवल से भी ऐसे कॉल्स आते हैं, और हम उनको अटेंड करते हैं आफ्टर वैलिडेशन इंफॉर्मेशन। सो दे ज्वाइन फॉर अस एज अ वॉलंटियर बेस्ड राइट नाउ। बट जहाँ पे हमें रेस्क्यू रियूनियन ऑपरेशंस रहते हैं जैसे, तो वहाँ पे हम पेड वॉलंटियर्स भी लेते हैं। बट सीनियर सिटीजन जहाँ पे हमें काउंसलिंग, साइकोलॉजी काउंसलिंग, या उनका एक्सपीरियंस रहता है पेंशन के रिगार्डिंग, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो भी पेपर वर्क रहता है, तो उसके लिए हम लीगल एडवाइजर भी लेते हैं बोर्ड पे, और उनको हम डिपेंड ऑन केस हैंडलिंग भी प्रोवाइड दें, मतलब पेड उनको देते हैं। बट बहुत यूज नहीं हम कर पाते अकॉर्डिंग बजट। सो बट जितना अलॉट है हम वो करते हैं। तो यहाँ पे है, जैसे आपने, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन भी था डिस्कशन का कि डज एल्डरली एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस द जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बट वो वैसा नहीं है।
तो जितने एल्डरली इसमें आएंगे उतना ही एम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो इस पे भी हम अवेयरनेस सेशंस करते हैं, कम्युनिटी में पब्लिसिटी एक्टिविटीज करते हैं कि एल्डरली का जो भी नॉलेज है वो कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं थ्रू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड जैसे गुड फेलोज भी काम करते हैं लाइक दैट। सो जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे हम पेड वॉलंटियर्स लेते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। एंड अगेन आपने अपना नंबर भी शेयर किया है हेल्पलाइन का, एंड मेनी पीपल को पता नहीं है, मगर थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। तो जिसको भी चाहिए और जो लोग अटेंडीज भी है, प्लीज ये नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू आर गेटिंग दिस फैसिलिटी। कौसर, आपसे फाइनल आखिरी सवाल की what it motivated you and why are you, it's a tough job जैसे सबको पता है, तो आपने क्या सीखा और आपकी मोटिवेशन क्या है टू कंटिन्यू वर्किंग देयर? यहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि हम लोगों को कि नॉर्मली जो इस फील्ड में नहीं है, जिन्होंने सीनियर सिटीजन के साथ नहीं रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये बोल रहे हैं, इनको दर्द हो रहा है। मोर ऑफ देम उनका पेन जो होता है वो साइकोलॉजिकल भी होता है और पेन भी होता है, बट ये समझना इतना इम्पोर्टेंट है होगा ये मैंने नहीं सोचा था। जब से मैं 3 साल से जब से यहाँ जॉब कर रही हूँ, जब से मैंने इनके साथ मैंने काम किया है, तो मुझे इनका मेनली सीनियर सिटीजन का साइकोलॉजी समझा है कि इनका मेनली चाहते क्या है, इनको कुछ चाहिए, उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। जब उनको भूख लग रही है तो वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि मुझे भूख लग रही है, तो थोड़े एग्रेसिव होंगे, गुस्सा करेंगे या तो सो जाएंगे, बात नहीं करेंगे। ये सब चीजें सीखने को मिली और अच्छा लगता है कि हम भी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसे हैं, हम किसी को बता सकते हैं कि ऐसा इनको संभालना है, ये कंडीशंस है, कैसे उनको डील करना है उनके साथ। ये सब चीजें वेट करती है कि हम भी सीखे और हम आगे लोगों को भी सिखाएं कि कैसे इन लोगों को हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज आजकल की ये बहुत बड़ी नीड है। हमारे घर में भी पेरेंट्स है जो धीरे धीरे इस एज में आएंगे, तो हमें भी पता चलना चाहिए कि कैसे इनको डील करना है, क्या है उनके मन में क्या चल रहा है, उनको फिजिकली क्या प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकली क्या चाहते हैं। ये सब चीजें मोटिवेट करते हैं। मैं चाहूंगी आगे भी लोग सीखे इस बारे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल। It's very important for day-to-day life now, for senior citizen also and for youth also. Very nicely said. And Akanksha, final question to you Yes, is what has been your learning and what would you like to share with everybody? Okay. एवरी डे इज अ लर्निंग। जब भी मैं एसोसिएशंस में जाती हूँ, ओल्ड एज होम रेसिडेंस में जाती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना मिलता है। फ्रॉम एवरी ओल्डर एडल्ट आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू। So some things like I would like to share is like there is no age for learning. मतलब आप कौन सी भी एज में like you can learn anything, you can follow your passion. Like when I brings जब भी वेबिनार्स होते हैं, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, तभी हम कॉल करके ओल्डर अडल्ट्स को एक रिमाइंडर कॉल देते हैं। सो लाइक दे टेल अस कि हमारा रूटीन बताते हैं कि नहीं कितना बजे है मीटिंग, मेरा तो अभी डांस क्लास है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। सो they are so occupied, they are following their passion, dance class जाते हैं, singing class जाते हैं, yoga class जाते हैं। So there is no age for learning and they are stick to their priorities like family. Professionally, they might have worked now, they have giving prioritize to their family, their passions. They have a wisdom of knowledge. जब भी हम जाते हैं senior citizens, they are very kind, they are very loving. Because I stay in Panvel and I travel to Kandivali and I mostly travel to the western sides. जब भी लेट होता है तो तभी वो पूछते हैं कि लाइक बेटा वेयर डू यू स्टे, तो आई से दैट आई स्टे एट पनवेल। सो दे लाइक सडनली लाइक अभी कितना टाइम होगा आपको जाने को, आपको 3 घंटा लगेगा, आप कैसे जाएंगे। लाइक सो दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी काइंड and they are very loyal. Like for example, I will give you like a lady from a Ghatkopar association. She belongs to Ghatkopar association, but her village is near to Panvel. Palaspe is a village like near to Panvel. So she said कि वहाँ पे भी females group है, आप आइए, उन्हें बताइए graceful living के बारे में. So it's like she was contact with me in till 15 days. So like as discussed, like Panvel was near to me, so I will go and have a first visit. So she was like, कुठे पोचलात तुम्ही? Like when I went home, she really appreciated me. Like she appreciated my time. She valued my time. You came all the way. She made that batata vadas with that love that she made me sit. She gave me cup of coffee and like
and that day it was raining a lot, बहुत बारिश था तभी. So that was like, ऐसा लगा ही नहीं that she is a very like unknown lady to me. As like I feel like I just remind my grandmother. So they are very loving, they're caring, they are very loyal, and they're very kind. They have wisdom of knowledge. So while I visit different associations, I learn something new. They share their stories, and I think that is always a learning, and that is the motivation that keeps me going on. Superb, so beautifully said, and I can see there's a lot of compassion and empathy. आप जॉब की तरह जॉब नहीं कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, Yes, and learning. And जो आपने बोला, मैं उनको एक कॉइन करता हूँ टर्म, स्टूडेंट ऑफ लाइफ माइंडसेट होना चाहिए सबको, हमको यंगस्टर्स को भी, एल्डरली को भी, एंड क्यूरियोसिटी कि क्या हो रहा है, ये क्यों है. आई थिंक दिस ऑल्सो कीप्स योर माइंड एंगेज. एंड विद दैट वी वुड लाइक टू क्लोज दिस सेशन, बिकॉज हम टाइम का थोड़ा सेंसिटिव रहते हैं कि लोग जो आ रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट को भी अपने प्रोग्राम्स होते हैं, अदर कमिटमेंट्स. बट एक बात है कि वी वांट टू कंटिन्यू दिस ट्रेडिशन. हम हर लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ को यूजुअली वेबिनार रखते हैं, एंड फॉर पैनलिस्ट एंड अदर्स, इफ यू हैव एनी सजेशंस ऑन द टॉपिक्स, टुडे वाज अ ब्यूटीफुल टॉपिक. एक यू नो सेंसिटाइजेशन, कितने कुछ कवर किया हमने, कि राइट फ्रॉम यू नो इंटरजनरेशनल फिटनेस. एंड आई ऑलवेज टेल, सबको मैं बोलता हूँ कि लाइफ में अगर आपको कुछ भी चाहिए, पेड एडवाइस प्रोफेशनल लेना पड़ता है, बट यहाँ हमारे वेबिनार में आपको एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, पैनलिस्ट आ रहे हैं. दो इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, ऑफ कोर्स विल चार्ज यू, बट दिस इज द ओनली फ्री टाइम व्हेन यू कैन टैप इन द नॉलेज, गेट द नॉलेज. एंड ऑफ कोर्स पोस्ट दैट अगर किसको भी प्रोफेशनली उनको एंगेज करना है, दैट इज डेफिनेटली देयर. बट प्लीज गिव सजेशंस, प्लीज गिव इनपुट्स कि हम इसको और इम्प्रूव कैसे करें, और क्या सब्जेक्ट्स है, व्हाट आर द अदर challenges which senior citizens face. And जैसा टाइम जा रहा है, जैसे कंपटीशन बढ़ रही है, every youngster is also getting busy, तो कोई जजमेंट नहीं बोल सकता, किसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि अरे पहले का टाइम ऐसा था, ये था. अभी वो जो है सो है करंटली. तो हाउ डू वी को एग्जिस्ट, हाउ डज थिंग्स मूव एंड ऑल दैट. सो with that, again, like to thank Graceful Living for this opportunity, and always I enjoy moderating because मैं तो बहुत सीखता हूँ. बोलते हैं ना, when you are trying to moderate you keep learning. इसलिए मैं भी हमेशा पेन और पेपर रखता हूँ, पॉइंट्स नोट करते जाता हूँ, because it all helps. Each one of us have to be students to understand, to learn करके how we can improve the life. वो mindset बहुत important है. एक mindset is very important, that हर एक थिंग की लाइफ का लेंस चेंज करना है, कि हाउ कैन वी मेक अ डिफरेंस टू समबडी एल्स इन द लाइफ, मेक्स इट मोर मीनिंगफुल. With that, thank you very much for Graceful Living, the team, the trustees, everybody, and to the panelists, and और जो लोग हमारे attendees थे, both on Zoom and on online, Facebook, etc. में. And please share this recording with all others who can benefit. वो लिंक तो हम लोग Graceful Living शेयर करती है सब पार्टिसिपेंट से, तो ये मैसेज और एम्पलीफाई है हो. और एक्चुअली अगेन आई विल रिपीट, पीपल हु हैव ट्यून्ड इन और 1 घंटा इन्वेस्ट करें, उनको कितना नॉलेज अंडर वन रूफ मिल रहा है ऑन दिस सब्जेक्ट इज अमेजिंग. सो थैंक यू वंस अगेन, हैव अ लवली सैटरडे एंड अ वीकेंड, एंड गॉड ब्लेस एवरीवन, एंड लेट अस कंटिन्यू दिस ट्रेडिशन. थैंक यू. Thank you so much. Thank you, sir. It was great to have you as the moderator. You're one of the most brilliant person on this team. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, madam. बहुत अच्छा क्लास किया. Sakshi, Yes, can you yes, put that? Yeah, the slide पर दोबारा पाठ में. yes, sir. Sure. I'll हाँ, check. yeah. Thank you.